Now today we are going to start with chapter number 2, Magical Beans. Jack was a poor boy. Once he went to the market to sell a cow, the only possession they had at home. A funny little old man met him on the way and offered him 5 magic beans in lieu of cow. Jack made the deal without thinking much, though his mother scolded him for this foolishness, but the magic beans made him rich in the end. ठीक है, कैसे वो रिच हो गया था? ठीक है, अपनी काऊ को देखे, चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. There lived a poor boy named Jack and his mother. They were very poor and the only possession they had in the world was one cow. The cow had become old and stopped giving milk, so Jack's mother decided to sell the cow so as they could live comfortably for some days with the money they would get. देखो, poor boy था, जान और उसकी मदर दोनों रहते थे. खाली जो इनके पास एक काव थी जिनसे वो मन करते थे, और काव बहुत ओल्ड हो गई थी तो उसने मिल्क वगैरह देना बंद कर दिया था. तो उसकी मदर ने सोचा कि वी विल सेल दिस काव, ठीक है, जो उससे पैसे मिलेंगे हम कुछ टाइम तक अपना जीवन जिएंगे. So one day she asked Jack to take the cow to the nearby market and sell it. She instructed him to try to get much money as he could for the cow. Jack obeyed his mother and took the cow to sell in the market. एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर कहती है इस काव को लेके जाओ नियर बाय मार्केट में, इसको सेल करके आना, बेच के आना. उसके अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन को ओबे करता है, वो जाता है काव को लेके और उसको बेच के आता है मार्केट. As Jack treaded the long and dusty path on the way of the market, he met a funny little old man on the way. When he come to know Jack's desire of selling the cow, he offered him 5 beans for his cow. ठीक है, उसको एक लिटिल ओल्ड मैन मिलता है, जिससे पता चला कि वो काव को बेचने जा रहा है, तो उसने क्या करा, उसको 5 beans दिए for his cow. ठीक है, so you want a cow for 5 beans, don't you? Jack asked. कि so you want a cow for 5 beans? वो 5 beans में cow चाहिए. The little old man smiled with a strange twinkle in his eyes. They are in fact magic beans, said he. 5 magic beans? What a bit of luck, thought Jack. He did feel like driving the cow all those miles to the market. He could dispose her of for 5 magic beans then and there. वो सोचता है कि इतने दूर क्या जाऊंगा इतनी डस्टी मार्केट में, नहीं दे देता हूँ इसको 5 beans में. ठीक है, आर यू श्योर दे आर मैजिक बीन्स? और जैक उसको पूछता है कि क्या तुम श्योर हो ये मैजिक बीन्स है? रेस्ट एश्योर्ड दे आर द बेस्ट क्वालिटी हाई पावर मैजिक, डिक्लेयर्ड द लिटिल मैन. ये लिटिल मैन जो तुमने बताया कि बेस्ट क्वालिटी के हैं और हाई क्वालिटी के, एंड यू विल गिव देम टू मी फॉर माई काउ. ठीक है, और ये तुम मुझे दोगे फॉर माई काउ? ओह यस, देन सेड जैक एंड हैंडल्ड हिम ओवर काउ इन एक्सचेंज ऑफ 5 ड्राई ओल्ड. वो जो 5 ड्राई ओल्ड बीन्स है उसके जगह उसको लेकर उसमें एक्सचेंज में उसने अपनी गाय काउ उसको दे दी. यू कैन इमेजिन व्हाट जैक्स मदर कुड हैव सेड व्हेन जैक गॉट होम विद द 5 बीन. शी थॉट इट वाज अ फुलिश फॉर हिम. शी थ्रेल्ड हिम साउंडली एंड सेंट हिम टू बेड. शी वाज फ्यूरियस. एज फॉर द बीन्स शी थ्रू देम आउट ऑफ द विंडो. उसे गुस्सा आया, उसने उसको उस पर चिल्लाई और उसने बीन्स को विंडो के बाहर फेंक दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग जैक woke up very early, and when he looked out the window there in the garden, what he saw was most enormous beanstalk one could imagine. वो देखता है बहुत ही बड़ा, जब वो सुबह उठता है देखता है बहुत ही बड़ा beanstalk वहाँ पे उसको दिखाई देता है गार्डन में. The beans had taken root and they were for sure magic beans. Overnight the stems had grown as thick as train trunks, and Jack leaned out of the window and craned his neck up, and he could not see top of the beanstalk. वो इतनी ज्यादा फैल गए थे, इतने बड़े बड़े ट्रंक हो गए थे कि वो उसके ऊपर भी नहीं देख पा रहा था. It went right through the clouds. The 5 bean sprouts had twinned around each other and round up and ऐसे round होके और बहुत ही ऊंची हो गई. Taking care not to awake his mother, Jack dressed and went out. He began to climb the beanstalk. He wanted to see what was there at the top. उसको क्लाइम करके देखना चाहता हूँ. हमने अम्मी को तो उठाया नहीं, वो उठता है, तैयार व्यार होता है और उसको चक के देखता है कि इसमें टॉप पे है क्या. Up and up he went until came to the top, and to his surprise there was another land. He saw a path and walked on. It led him to Ryu's grim custom. The heavy doors were shut from inside, so he went around it and found windows open. As he went inside, he could smell dentist mutton being cooked. He was hungry. All that climbing had roused him appetite. He found himself in a vast kitchen,
and there on the fire was a great cauldron of porridge. ठीक है, वो देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी डोर थी, बहुत सारी विंडो थी और वहाँ पे मीट बन रहा था। क्या बन रहा था? कि मटन, डेंटिस्ट मटन कुक हो रहा था। ठीक है, फिर वो जाता है किचन में, पहुंच जाता है, बहुत ही बड़ा किचन होता है। फिर वो वहाँ देखता है कि फायर पे, ठीक है, वॉज अ ग्रेट कॉल्ड्रन ऑफ पॉरेज, ऐसे करके भिगोने में क्या लिखा था? पॉरेज लिखा था। जैक वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट टू हेल्प हिमसेल्फ विद अ लिटिल पॉरेज when he heard heavy footsteps that shook the whole palace. The sound of deep rumbling voice singing fee foo fo fum also struck his ear. वो देखता है कि वहाँ से बहुत ही खतरनाक आवाज आ रही होती है, फी फू फी फाइव फू फम की। ठीक है, और वो उसके कान में जाती है। Jack was scared. He hid himself behind a big oven and peeked out. In the adjoining room, seated at the table, was a giant og, and Jack trembled for he knew that ogs eat human flesh and Jack did not want to be eaten. वो देखता है कि एक giant og वहाँ बैठा हुआ है, उसको ये तो पता ही था कि ह्यूमन को खा लेता, वो दुबकने लग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसको खा ले। But this once ate the porridge and then sat back and went fast asleep at the dining table. Jack crept out of the oven and began to walk to the door. ठीक है, उसको ओवन में से निकालता डोर की तरफ मूव करने लग जाता है। He stopped and stared for on the table. The orc was sleeping where kept a pile of bags of gold and jewels. जहाँ पे piles of golds और jewels रखे थे, वहाँ पे orc क्या था? सो रहा था। Just one little one would solve all my troubles. One little bag of gold would keep me and my mother in luxury for a long time to come. उसने सोचा खाली एक ही गोल्ड बैग ले लेता हूँ, वो मेरी मदर को और मेरे को लग्जरी में रखे। Jack heard Tom loudly, but he did not lose courage. He tiptoed to the table, picked up one little bag of gold coins, and climbed down the beanstalk back to his cot. ठीक है, वो वहाँ से एक गोल्ड कॉइन का बैग उठाता है और कूद के अपने कॉटेज में चला, घर में चला जाता है। He found his mother standing near the beanstalk, wonderstruck as to where from this it had emerged overnight. वो सोचती है, वो भी उसके पास खड़े होकर सोचती है कि इतनी रात में कैसे इतना बड़ा हो गया, कहाँ से इमर्ज हो गया। She was even more alarmed when she saw a Jack climbing down. She anxiously waited for him to get down and asked in a stern voice what he had been doing on such an enormous beanstalk. वो अपनी छोटी सी stern voice में कहती है, ये इसके ऊपर कर क्या रहा है तुम बड़े beanstalk के ऊपर। Jack told her about this adventure and showed her a bag with a gold coin. His mother was happy that now they had not to go hungry. With this gold, they lived very happily for a long time. उसको मौसम ने मेरे को पूरी कहानी बताई और वो गोल्ड कॉइन्स का बैग उसको बहुत खुश हुई। ठीक है, You might know that more money in hand increases expenditure. The same thing happened with Jack also. The gold did not last very long and Jack decided what he would have to make another trip up the beanstalk. So once more he found his way to Grim Castle and hid behind the oven until the orc come out for his dinner. वो दोबारा से जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है डाइनिंग टेबल के पास जब तक और नहीं आता। ठीक है, This time the orc was carrying a hand. He put a hand down on the table and orderly. It clucked and laid a golden egg. Gracefully the orc slipped it into his pocket, ate his huge dinner and went to sleep. ठीक है, तो orc ने क्या करा, उसका जो egg था अपने पॉकेट में रखा और वो स्लीप के लिए चला गया। When his snores were echoing like thunder, Jack crept out of hiding and reaching up very carefully, seized the magic hand by the leg. At once it started to quack and cluck and the orc moved. जैसे उसको वो उठा के ले जाता है ना, तो चिल्लाए क्वाक क्वाक करने लग जाती है और orc क्या करता है, वो उठ जाता है। Jack was now in trouble. He ran from his life with orc pounding behind him. Jack was a young, he was habituated to climb up and down the beanstalk, but the orc was old and soon got tired. By the time Jack had got down beanstalk again, the orc was only halfway down from the sky. जब वो कूद रहा था तो और भी क्या था, halfway था from the sky. Without wasting any time, Jack brought out a big axe from his house and chopped down the beanstalk. Down it came dropping from the sky and came down the orc too. और जब उसको chop करा था तो orc भी क्या हो गया, नीचे आ गया। The orc hit the ground with a thud and he made a hole so deep that never got out again. ठीक है, वो ऐसा गिरा और ऐसा होल बना कि वो कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाया।
And Jack and his mother gradually become richer, nay the richest in town by selling the golden egg. And the magic hand laid a unfailingly for all times to come. ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए और फिर उन्होंने जो गोल्ड हैंड के जो मैजिक एक्स थे वो बेचना स्टार्ट करा और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, रिच हो गए. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.